नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. नवी दिल्लीत भारत AI इम्पॅक्ट समीट 2026 सुरू आसा. 5 दिसांची ही शिखर परिशद ग्लोबल सावथांत आयोजीत जावपी पयलीच जागतीक AI शिखर परिशद आसा. जागतीक AI अजेंडाक आकार दिवपाक एक मुखेल माची म्हूण भारताची भुमिका ही शिखर परिशद बळकट करतली. जागतीक AI सहकार्यांत भारताक संयोजक आनी भागीदार म्हूण सुवात दिता, जे सामायिक मानकां, सहयोगी चौकट आनी भौशीक हिता खातीर उपायांक समर्थन दिता. ह्या शिखर परिशदेंत 100 परस अदीक देशांक आमंत्रीत केल्यात आनी 2 लाखां परस चड लोकांनी ऑनलायन नोंदणी केल्या. 20 देशांतले संवसारीक फुडारी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावतले. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी इंडिया AI इम्पॅक्ट समिटाचें वर्णन भारतान लोक पयली लोकशाही AI फुडार घडोवपाच्या प्रयत्नांत मुखार आसा आनी हें शिखर परिशदेच्या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ह्या मथाळ्यांतूच प्रतिबिंबीत जाता अशें म्हणलें. भौशीक कल्याण, सुलभता आनी जागतीक सहकार्य हे AIच्या उत्क्रांतीच्या केंद्रस्थानार दवरून देश जागतीक उत्तरेच्या तांत्रीक ताकदीक जागतीक दक्षिणेच्या प्रमाणांत आनी क्षमतेकडेन जोडपाचो प्रयत्न करता अशें म्हळें. संवसारभरांतले लोक इंडिया AI इम्पॅक्ट समिटा खातीर भारतांत येतात ही देशवासियां खातीर अत्यंत अभिमानाची बाब आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी जगभरांतले संवसारीक फुडारी, उद्योगक फुडारी, नवोन्मेशक, धोरणकर्ते, संशोधक आनी तंत्रज्ञान मोग्यांचें शिखर परिशदे खातीर हार्दिक स्वागत केलें. हो प्रसंग देश विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांत वेगान प्रगती करता आनी जागतीक विकासांत म्हत्वाचें योगदान दिता हाचो पुरावो हाचेर मोदी हांणी भर दिलो. देशांतल्या तरणाट्यांच्या क्षमतेचें प्रदर्शन करता. सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वा सगळ्यां खातीर कल्याण सगळ्यां खातीर खोस हो शिखर परिशदेचो मथाळो मानव केंद्रीत प्रगती खातीर कृत्रीम बुद्धिमत्तेचो वापर करपाच्या देशाच्या सामायिक वचनबद्धतेचें प्रतिबिंब आसा अशें तांणी म्हळें. कलम 370 रद्द केल्या उपरांत काश्मीर, ईशान्य आनी माओवादग्रस्त भागांतलो हिंसाचार 80% कमी जाला अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. तो दीस पयस ना जेन्ना ह्यो सुवाती हिंसाचारा पासून पुरायपणान मुक्त जातल्यो अशें तांणी म्हळें. धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों क्षेत्र पूर्णतया हिंसा से मुक्त हो जाएंगे. दिल्ली पोलिसांच्या 19व्या स्थापना दिसा निमतान उलयतना तांणी मुखार सांगलें की 11 राज्यांत पसरलेलो माओवादी दहशतवाद देशाच्या अंतर्गत सुरक्षे खातीर सदांच एक व्हड आव्हान थारला अशें तांणी म्हळें. माओवादी आतंकवाद हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था, मगर मुझे दिल्ली की जनता के माध्यम से देश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम माओवादी क्षेत्रों को हमेशा के लिए नक्सलवाद से मुक्त करने के बहुत नजदीक हैं. मैं देश की जनता को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं. 31/3/2026 को पूरे देश को हम माओवादी हिंसा से मुक्त करने में सफल होंगे. राष्ट्रीय राजधानीत पोलिसींक अदीक घटमूट करपाक दिल्ली पोलीस स्पेशल सेल इंटिग्रेटेड मुख्यालयाची बुन्याद घाली. इंटिग्रेटेड मुख्यालय 345 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चान बांदतले आनी ते घुवळी वखदांची तस्करी आनी दहशतवादाचो फुडो करपाक देशांतले सगळ्यांत प्रगत केंद्रांपैकी एक जावपाक सज्ज आसा अशें सांगून अत्याधुनीक कॉम्प्लेक्सांत आधुनीक इंडोर फायरिंग रेंज, वॉर रूम, सायबर लॅब, प्रशिक्षण हॉल आनी ऑपरेशनल कार्यक्षमता वाडोवपाक वेगवेगळ्या प्रगत उपकरणांचो आस्पाव आसतलो अशें तांणी सांगलें. देशभरांत पोलीस विभागां खातीर हें एक आदर्श खासा कक्षाचें मुख्यालय म्हूण उदेतलें अशें तांणी म्हळें. 10,000 कैमरों से दिल्ली को जोड़ने के कार्यक्रम के प्रथम चरण में 2100 कैमरे भी लाइव जुड़ चुके हैं. दिल्ली में पहले से मौजूद 15,000 से ज्यादा कैमरे को भी इसके साथ जोड़ने का काम पूरा हो चुका है और मुझे विश्वास है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में दिल्ली की सुरक्षा को बहुत आगे तक ले जाएगा. दादल्यांच्या T20 क्रिकेट विश्वचषकांत आयज दनपारां नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमांत जाल्ल्या गट D मॅचींत अफगाणिस्तानान युनायटेड अरब अमिरात UAEचेर
5 विकेटींनी जैत मेळून सर्तींतलें पयलें जैत नोंद केलें. भारतीय हवामान खात्यान ह्या म्हयन्याच्या 18 तारखेमेरेन तमिळनाडू, केरळ, लक्षद्वीप हांगा कांय सुवातींनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. कर्नाटकाच्या दर्यादेगेवेल्या भागांनी, कोकण आनी गोंयांत उश्ण आनी दमट हवामान आसतलें अशें हवामान खात्यान कळयलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.